Welcome to Sports Star Extras. And joining us today is Indian table tennis's golden girl, Manika Batra. Welcome to Sports Star Extras. Hello, good morning, and thank you for inviting me. And we also have Manika's coach, Sanmay Paranspe, who runs a successful training center in Pune titled India Kelega. Welcome, Sanmay. Hello, good morning. Thanks for inviting us. As we all know, Manika has recently joined for her second successive Olympics and for the first time in two events. So, Manika, to begin with, what has changed between the 2016 and 2020 Olympic qualification answer? Sorry, 2021 now. Yes, of course, बहुत ज़्यादा change आया. Like in 2016, I don't think जो training like after 2016 when I qualified, वहाँ पे जो मेरे आसपास लोग थे, they were like okay fine, aim जो था that is वो achieve हो गया. But अभी when I qualified, my coach Sanmay Paranspe, after qualification only he like we went to the gym and मेरा gym session start हो गया था. So I can see that difference. ये small है but I can see that difference. And yeah, of course, training का I will say that here where I'm training in Pune, बहुत effort के साथ and जो कराया जाता है मुझे effort के साथ, it's really helping me in my game. जो मैंने देखा है from like I played really well with Chenzu Yu. I've beaten her. Then Zogs Bernadette from Romania, I've beaten her. So I have like I'm feeling that change in myself, and जो confidence level अभी बढ़ा है, which is really nice. So बहुत अच्छा हो रहा है मेरे लिए. So the other obvious change, Manika, besides your training regime, like you said, has been the inception of Ultimate Table Tennis. Can you just talk about the impact of UTT despite the year-long break now on the overall Indian table tennis ecosystem and such? Of course, I think सारे players they are missing UTT. अभी नहीं हुआ. So बहुत change आया है in the process. Of course, when the foreigners come here and when we play with them, and जो you know that friendship and वो comfort level आ जाता है. So when that really helps, honestly, and when then we go out abroad and play with them, तो वो confidence level and comfort level होता है that I have played before in UTT with this girl or some जो भी होएगा. So वो comfort level and confidence of course आता है, but साथ ही साथ training is really important. ऐसा नहीं होना चाहिए that we comfortable and I go there and I can beat her. Training is really important, which I am doing, and yeah, UTT has really helped all of us to like boost our confidence level, and of course they are doing great. 2017 में start हुआ था, so I think बहुत change आया है. And to be honest, मैं बस UTT खेलती हूँ. I don't play any other league जो abroad जो सारे players खेलते हैं. I get offers, but like I train here in Pune, and I do like जो भी training हो सकती है I do here in India. So UTT मेरा only जो एक ही league है जो मैं खेलती हूँ. I'm really happy कि ये league बहुत अच्छा जा रहा है. And of course when I speak to other players जो foreigners हैं, they are really liking it, and बहुत अच्छे views आते हैं इसको लेके. So yeah, I'm really happy कि India ये सब कर रहा है. Sanmay, can you just talk about how did you all plan the last year in detail? You mean the year in lockdown or yes, since last March till today or till the Olympic qualification, how did you all plan Manika's training regime? And yes, so since Manika was in Pune, I always had one aim as a coach, that was to get some work ethic in her. And the lockdown and this whole period where there is no tournament, I utilize that phase to get some kind of work ethic in her. And I must appreciate and confess that now she is very good on that front. Two, why the work ethic? That was to work on her technique. But if you ask me as a coach, you can work on some technique, build some game technically, only if the player has some work ethic. And at the level where she has to perform,
like she was used to like yes ये 10-15 बार करेंगे, ये 8-12 बार ये हो जाएगा. Then we became very precise and clear. I think that has helped her to work technically. I guess she always knew that I have to work on my forehand, but for that you need a work ethic in place so that you can actually spend time on working on your technique. This is what I worked upon in the whole of last year, and I got good opportunity because there were no tournaments. So in a way, the lack of tournaments, you are saying, kind of turned out to be a boon rather than a bane, is it? Yes, because since 2019 I was trying that, but there was always some or the other challenge coming up. Then you cannot mend too much before a tournament. Right. And always the initial process is tougher. So now we are through with that. So now she's used to mending things. Right. Yes. Manika, obviously, like Sanmay said, in the last couple of months, you have ticked virtually every box that you had aimed for, the nationals followed by the Olympic qualification. Specifically about mixed doubles, Manika, आपने और शरत ने obviously Asian Games में पहले history create किया. उसके बाद यहाँ you beat the world number 5 pair and qualified, which was a really difficult task. Do you think this is India's best medal chance? कितना भी outside हो, लेकिन this is India's best medal chance in Olympics in table tennis? Okay, to be honest, like I don't think ऐसा कोई सोचता होगा कि tournament, like personally I don't think कि मैं tournament जाने से पहले ये सोच के जाऊँ that I have to win a medal. Of course, India के लिए कुछ करके आना है, ऐसा होता है. But if I say that I will win gold medal or I will win silver medal, I don't think कि ऐसे कोई सोचता होगा, क्योंकि वो pressure आता है, of course. But like training only matters. अगर मेरी training अच्छी चल रही हो, like in mixed doubles also I have to play my best. अपना जो singles का अपना practice मतलब अपना best दूंगी तो I can match up जो भी अभी world number 5 थे, Lee Sang-soo and Jeon Ji, Korean players, उनके साथ भी like to tackle with their spin and services, which was really difficult. But I think I really did well. तभी शरद भैया को भी वो हेल्प हुआ उसके लिए कि वो अपना अटैक फ्रीली कर सके. And I think I played really well in mixed doubles. So this is really important. अगर मैं अपना singles का training अच्छा कर रही हूँ, अगर अच्छा चल रहा हो तो I can give my best in mixed doubles as well. तो अभी वही हुआ, and of course we will give our best कि हम टोक्यो में अच्छा कर सके. मिक्स डबल्स क्वालिफिकेशन मैच की आप बात कर रहे थे. शरद ने मुझे मैच के बाद बताया कि मतलब मैंने पूछा उनसे कि वो जो मनिका कंसिस्टेंटली ब्लॉक कर रही थी ली सांग-सू का रॉकेट फोरहैंड, तो सबसे ज्यादा सरप्राइज कौन था आपके लिहाज से? कौन था सबसे ज्यादा सरप्राइज? Yes, like you are correct कि ऐसे इतना तेज आ रहा हो, and वो भी कोरियन प्लेयर जो एशियन प्लेयर्स होते हैं उनका बहुत ही तेज आता है बॉल. So I was not surprised, to be honest, because I think जो मेरा यहाँ पे पुणे में ट्रेनिंग चल रहा है, like my coach is helping me, then Kirill from Belarus, जो उसका kick and जो fast ball होता है, I was handling that. So I think वो चीज मुझे बहुत help करी when I played mixed doubles. Lee Sang-soo का वो block करना, and I think कोई बॉल मैंने उसकी टॉप स्पिन भी मारे हैं. So I think वो चीज जो मैंने यहाँ ट्रेनिंग करी वो बहुत हेल्प करी थी मुझे. And I was not shocked, to be honest, but I was satisfied कि yes मैंने वो ब्लॉक किया, and I was prepared कि मैं अच्छा प्रिपरेशन करके आई थी. ओके, आखिरी सवाल पूछने से पहले मुझे आपसे पूछना है कि आपके बारे में बहुत सारे मिथ्स है या नहीं है पता नहीं, कि आपको हमेशा मॉडल होना था, ये जो हमेशा लोग बोलते हैं लिखते हैं, वो उसका सच बताओगे आप अब? मॉडल होना था या मॉडलिंग ऑफर्स आए थे, ये कौन सा मिथ? मॉडलिंग ऑफर्स नहीं आए, ये किसी ने बनाया हुआ है. आई डोंट नो क्यों बनाया है ये, बट यस किसी ने बनाया हुआ है कि मेरे को मॉडलिंग ऑफर्स आए थे. बट मॉडल होना है, यस. अभी मेरा एम इज टू अचीव समथिंग फॉर माय कंट्री इन टेबल टेनिस. सो मेरा भी वही एम एंड फोकस है. सो
मॉडल बनना या मॉडल होना, अभी वो मैंने उसके बारे में सोचा नहीं है, बट बाद में देखेंगे. बट अभी जो एम है वो बस टेबल टेनिस में मेडल लाना है फॉर माय कंट्री. सो या. और उसी उसी के ऊपर 2019 में जब हम लोग ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में बात की थी, तो आपने बोला था कि यस, फैशनेबल होना कुछ गलत बात नहीं है. तो Yes. मतलब 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में आपके नेल आर्ट के ऊपर बहुत फोकस रहा, बिसाइड्स योर गेम ऑब्वियसली. 2019 में वो आपके इयर रिंग्स टेबल टेनिस रैकेट वाले ऐड हो गए. तो ओलंपिक्स में क्या सरप्राइज है? वो आप सब नोटिस करते हो, दैट इज रियली गुड. सब सोशल मीडिया बता देता है मैडम. यस, मेरे को ये सब चीजें करना पसंद है. आई लाइक टू बी ऐसा स्टाइलिश और फैशनेबल होना बुरी बात नहीं है. लाइक मेरे को कॉन्फिडेंस आता है, इफ आई से ऑनेस्टली. तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं ऐसे खेलती हूँ. एंड नेल आर्ट ऑफ कोर्स मैं इंडियन फ्लैग का करती हूँ, विच इज रियली क्लोज टू मी, इंडियन फ्लैग. एंड मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है. ऑफ कोर्स अभी 2021 में ओलंपिक्स में मैं शेयर नहीं करूंगी, बट कुछ ना कुछ करके जाऊंगी ऑफ कोर्स. बहुत सारी प्लानिंग चल रही है. एनीवे, लेट्स कंक्लूड ऑन अ सीरियस नोट. ये सब फोकस नहीं है और ये मेरा एम नहीं है. ट्रेनिंग है, वो करना बहुत इम्पोर्टेंट है. सो आई विल डू दैट फर्स्ट, देन अगर कुछ अलग करना हो तो आई विल डू दैट एज वेल. यस. ऑसम. लेट्स कंक्लूड ऑन अ सीरियस नोट. आप दोनों से पूछना चाहूंगा कि अभी आपने और शरद ने हिस्ट्री क्रिएट की है मिक्स डबल्स में लगातार, लेकिन डोमेस्टिक सर्किट में अभी भी डबल्स एग्जीबिशन इवेंट माना जाता है. सिर्फ नेशनल चैंपियनशिप में डबल्स इवेंट्स खेले जाते हैं. तो आपको लगता है कि अगर एटलीस्ट सब नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट्स में डबल्स इवेंट्स इंट्रोड्यूस किए जाए तो उससे शायद डबल्स इवेंट्स में फोकस ज्यादा बढ़ सकता है? Yes, I feel that inter-institution and nationals, I think, already have mixed doubles, which are two very serious tournaments that our players play. To add to that, if anything has to be done, I would not suggest it during the zonals, but they can have a top 16 doubles tournament or something like that, based on the nationals and inter-institution rankings that they get of doubles pairs, mixed doubles pairs. Yes. They can have a top 16 event, probably in a good city. It should be only a doubles event for like two and a half days, where only 16 pairs come. And this I'm not only saying for mixed doubles practice, but then there will be sort of an aim, some importance that mixed doubles will get, which actually is the aim of your question, I feel. Awesome. Thank you. Manika, just one final bit. 2016 आप गए थे ओलंपिक्स के ऑ में, ओलंपिक्स का फील लेने. 2021 आप जा रहे हो कम्पीट करने. तो आपका खुद का ऑब्जेक्टिव क्या रखा है आपने इन टोक्यो? ऑफ कोर्स 2016 में गई थी मैं, बट अभी आई हैव समथिंग इन माय माइंड. एंड ऑफ कोर्स एम है टू लाइक आई वांट टू शॉक कि मैं कोई अच्छे प्लेयर को हरा के आऊं, कोई अच्छे रैंक के, और मैं अच्छा खेल के मैं उनको हरा के आऊं. दिस इज माय एम. एंड ऑफ कोर्स अगर अच्छा करती रहूंगी तो I can do something for my country in 2021. But to be honest, of course I will do something for my country in 2021. But to be honest, my aim is in 2024 I have to win a medal for my country. I will not promise that, but अभी से ही वो ट्रेनिंग मेरी स्टार्ट हो चुकी है for 2024, and of course 2021 की हो ही रही है. So 2021 में I like मेरा और मेरे कोच का एम है कि मैं किसी प्लेयर को, अच्छे प्लेयर को हराऊं एंड शॉक करूं. No, actually what I had told her that there will be immense pressure on you later. So this is probably one last event where you can play like a child, like a kid, and enjoy. And then that becomes very big of an advantage for anyone to play without expectation. You can be even more dangerous. Yes, that's true. Let's hope Manika ends up playing as freely, and I'm sure she'll continue to interact with Sportstar and all our listeners and viewers as freely. Of course, you support me a lot and you help me a lot, so I will do that. Like all media people, they do, and yes, so I will do that. Wonderful. Thanks a lot, Manika and Sanmay, and good luck
for Tokyo and the build up to it. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you.